guys, I've boarded the train. ये पश्चिम एक्सप्रेस है. It's leaving in a matter of 5 minutes. 11:25 का टाइम था वैसे तो, but right now it is way past 11:30 actually. It's 11:36. ट्रेन निकल रही है. I'm all set for Spiti and I'm super excited for this. So here I am. अभी I guess just वापी गया है. I'm actually waiting for सूरत. सूरत से मुझे I want to order from the same restaurant that I ordered last time. हरे कृष्णा रेस्टोरेंट करके वहाँ की जो मिनी थाली है. Oh my god, it has my heart. वहाँ से मुझे मंगाना है. बट सूरत आएगा 4 बजे. It's going to come somewhere around 3:45 I guess. अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है. I'm hungry already. It's around 2 p.m. right now and the train has halted at this place called Dhirpur. We are going to get down at Chandigarh, which is going to come around 3:30. Chandigarh utar ke the driver is going to pick us up. Ronnie bhaiya, he's going to pick us up and then we'll be proceeding to Himachal. Hi guys! तो अभी चंडीगढ़ उतर गए हैं हम and Ronnie bhai, he is waiting outside. I have to figure जाना कहाँ से है. इतना सारा सामान लेकर I'm heading now towards the exit. तो अभी मैं चंडीगढ़ स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ. This is the car. सामान ऊपर चढ़ रहा है. And then we are going to take a halt for lunch. बहुत ज़्यादा भूख लगी है. उसके बाद we'll be heading to शिमला. Food is here. Yeah, veg pulao. Then we have paneer labab dal and some rotis. Morning guys, it's the next day. I am in शिमला. शिमला से अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं. It's around 12. रात को यहाँ पे आते आते बहुत लेट हो गया था, so I didn't get to vlog anything. मैं आके बस सो गई थी. Now we are heading to Kalpa. On the way we'll be visiting the Kinnaur Gate as well. So yeah, let's go. Look at them. How cute. एक पॉइंट पे अभी हम रुके. ये मेरे पीछे यार्ड्स है एंड वी स्टॉप फॉर सम चाय एंड मोमोज. तो अभी उसका ऑर्डर देंगे एंड आई विल कैच यू देयर. मोमोज थे नहीं, सो आई हैव गॉट सिद्धू. आई एम एक्साइटेड टू ट्राई दिस. Good morning. I'm in Kalpa. I just woke up and oh my god. Get ready for these views. This is literally what I'm able to see from my balcony. Oh my god. I don't know if the camera will be able to capture it, but I can see Kinnaur Kailash from here. That peak right there, that's Kinnaur Kailash. Hi! So I'm all decked up, ready to leave. This is Riya. Hi. Now we are heading to Kaza. Kaza के लिए जाएंगे beach में. We're going to do some points. And yeah, let's go. We're at the suicide point in Kalpa and the views here. I'm not even kidding. The kind of peace that Himachal is going to bring you.
कश्मीर सब फेल है इसके सामने. Everything, literally everything. This place is heaven on earth. I'm in love with the place. We have now stopped here. We are going to Kalpa Monastery. That right there, that's the monastery. I'm gonna vlog it. So beautiful, like look at these views. जहाँ तक नज़र पड़ रही है, I'm only able to see pretty mountains, pretty mountains, pretty mountains. The place is, मतलब कितने भी बार बोलूँ वो कमी ही है. No words can ever express how I feel about Himachal and how Himachal is. This, guys, is the monastery. Really so quiet. इतनी शांति, I cannot tell you. I've come to this मंदिर. एक नाग नागिनी मंदिर है. And this topi is compulsory over here. This is the Himachal topi. वो पहन के. The premises of this place, it's so quiet, literally. इतना ज़्यादा peaceful है. And see this. Just look at it. अभी एक और स्पॉट पे रुके हैं हम लोग. देयर इज़ द कार. वी हैव हॉल्टेड. यहाँ पे देयर इज़ अ रिवर फ्लोइंग ओवर देयर. लुक एट द रॉक्स. मतलब ये जो पहाड़ है, क्या पत्थर. कितने सालों पहले ये सब फॉर्म हुआ होगा. I'm gonna cry. Again, there's the waterfall behind me. It is so pretty, like it is so pretty. So I've come here at this place called Rapchik Cafe for lunch. दिखता तो काफ़ी cute है. Have to go in. I'm sorry. It's okay. So yeah, let's see. मुझे मोमोज खाने हैं. स्पीति आई हूँ तब से. Hi. So I've come here for lunch at this place called Rapchik Cafe. है तो काफ़ी cute जगह है. Like. I'm also Rapchik. What is your name? My name is also Nima. It's Nima means like a Buddhist name. Okay. It's like a sun. And आप So कितने साल से है कैफे आपका? ये कोरोना के टाइम से है. कोरोना के टाइम से. That's nice. नाम तो काफ़ी सही है कैफे का, रापचिक. एंड क्या फेमस है यहाँ पे? Sorry. फेमस खाने में सबसे बेस्ट क्या है आपका? सबसे बेस्ट आपका हमारा स्पेशली बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम हियर मैम. ओके. आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन दार्जिलिंग. ओके. स्पेशली हम लोग माय वाइफ शी इज फ्रॉम इन नेपाल. ओके. तो हम लोग दार्जिलिंग में उसका सबसे बेस्ट हमारे पास होता है मोमोज. मोमोज. ओके. और जो नूडल्स होता है ना, जो मार्केट का नहीं देते हैं, हम लोग उसमें मतलब मशीन खुद का है. अच्छा, तो पूरा एकदम फ्रॉम स्क्रैच बनाते हैं आप? खुद बनाते हैं. वाओ. ये एप्पल है. ओके. रॉयल एप्पल है. रॉयल एप्पल. हाँ जी. ये प्योर है. यहाँ से ऊपर तक है. बहुत है यार. इसका हम लोग जूस बनाते हैं ऑर्गेनिक. प्योर ऑर्गेनिक. यहाँ पर जो खुद निकालते हैं. तो इसमें से हाय. हाय. से हाय. हेलो. Just got done with the food and those were the best momos I've ever had. Like literally, बहुत tasty थे. The mojitos also were good. The apple one was the highlight of the show, but the momos, oh my god, very tasty. Halt at another point and every single place here is so pretty, so pretty.
the point. Now going back to the car, we are heading to. अभी हिक्किम जा रहे हैं ना? We are heading to Hikim now, the world's highest post office. We're gonna see that. Yay! Being in the fossil village. See, these are the fossils. I kid you not, these views are insane. These views are insane. These are on the way from Langzar to Hikim. Do you see that? And the clouds over here, सब कुछ इतना सुंदर है. I cannot express it. I'll just show you. Wait. Post office and I am freezing. It's so wind. The cold is not the problem. The wind is the problem. इतनी जोरों से wind चल रही है, हवा चल रही है. It's too cold. It's crazy cold. I'm literally freezing. That right there is the post office. So नीचे से there's a point नीचे where you get the postcards. वहाँ से postcards लेके then you post it over here. I've come to this very beautiful cafe called Pitti. You can see the ambience behind me and the views. I have called in for hot chocolate and it's honestly the best hot chocolate I've ever had.